Hello guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to a new fresh vlog. Guys, my name is Usman, Aryan. I'm living in China. If you are new to my YouTube channel, please consider subscribe and push the notification bell on that you would not miss any of my new video. So guys, right now I'm here at Anhui Normal University. I bought this bad baby, this bad boy DJI Mavic Air 2 fresh drone. So today I will fly this drone. It's my first time to fly this drone. I'm not that professional in this drone. So in this vlog, information gonna be very nice because one of the Pakistani students been killed by Chinese before 2 years, and it was very painful for us, and we were not expecting from Chinese government that they will punish this guy. He was 28 years old guy, but finally after 2 years Chinese government punished him with the death sentence. And great news for our Pakistani family. The guy was from Pakistan, Karachi City. I will also share this information at the end of this vlog, so stay with me, stay tuned to this vlog, and let's dive further into today beautiful, informative and DJI Mavic Air 2 vlog. The drone like so far, I don't know how far it was. I would check the details, but suddenly I lost the signal. I don't know, my god, my heart is still like beating so fast. I thought I lost the drone, and then I went the like maybe 100 meter like further to the drone, and then the drone came by itself. Like, it is good. I didn't know that if you lost the signal, drone can come back by itself, but thanks God. And it was so scary, but yeah, I'm flying drone again. I put another battery. I finished one battery, so I want to learn more and more because I flew the drone like for 2 years, but every new thing is different. So I want to fly again a little bit more safely and to collect some good footage and to share with you. But bear with this footage, guys, because it would be not that professional footage because it's my first time. Not first time indeed, but this drone is new, right? So I will fly very safe and not so hard like I went so far. So guys, I hope you would like some footage from this new drone. If you like, please drop the like and subscribe to my YouTube channel. Be the part of this great community. So let's fly again, right? बहुत सारे लोग मेरे जो है वो इंग्लिश स्पीकर है, इस वजह से मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। लेकिन जब आपकी कंट्री इस तरह की लॉ जो है वो नाफिज करती है और आप इस तरह की लॉ पे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो फिर कोई भी इस तरह का इक़दाम उठाने से पहले बहुत दफ़ा सोचता है। और तो उसकी एक दोस्त थी, उस लड़के की, उसकी दोस्त ने उसको तकरीबन 8 घंटे उसको अपने घर में रखा था। उस लड़की ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था कि इसने ऐसा इक़दाम उठाया, लेकिन बहरहाल उसको भी चाइनीज़ जो है अदालत ने 17 महीने की सज़ा सुनाई है, क्योंकि उसने उसको 8 घंटे के लिए अपने घर में उसको पनाह दी थी। तो ये है गवर्नमेंट, ये है लॉ एग्जैक्टली जो शरीयत या जो सिस्टम हमारी कंट्री में है, जो लॉ है मर्डर के बारे में, अगर उस पर अमल दरामद होता तो बहुत सारी केसेस जो है वो ना होते। लेकिन दिस इज़ चाइना गाइस, लुक how they made an example of that guy, and they hanged for that, yesterday. So I'm going to put all the information in the description. You can watch this, and especially मैं उस फैमिली को भी इसमें हमारी कंडोलेंस जो है वो कराची की जो फैमिली थी उस लड़के की उनके साथ है, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, हम भी यहाँ पढ़ते हैं। अगर खुदा ना करे किसी के साथ भी ऐसा होता है तो
हमको बहुत दुख होता है, लेकिन जिस फैमिली का बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो गाइज़ उस फैमिली को भी जो है वो रिलीफ मिल गया है शायद, उस फैमिली को तो पता होगा, लेकिन फिर भी हमारी जो है वो कंडोलेशन उनके साथ है, क्योंकि उनके बच्चे को, उस लड़के को, बहुत ही यंग लड़का था, मैं तो तस्वीरें अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो उनकी जो है वो इंसाफ उसके बेटे को मिल गया। तो ये है ओरिजिनल इंसाफ इसको कहते हैं। अगर आपको इंसाफ मिल जाए टाइम पे और आपका जो है वो जो भी चीज़ हो वो आपका ज़ाया ना हो जाए। तो बहरहाल गाइज, थैंक्स फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट, दे मेड एन एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट आई थिंक nobody will do act like that.